So, so today's topic is food and mood, and food is a very important. It's like fuel for your body. It's something which gives you power. So the kind of food you feed to yourself, to your body, the biochemical, suit of your soul. जब आप अपने बॉडी के अंदर जब ये फूड डालते हैं, जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसका एक रिएक्शन होता है, आपके सर्टेन काइंड ऑफ मूड्स ट्रिगर होते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपकी मेमोरीज के साथ भी कनेक्टेड हैं. जैसे कि आपको पर्टिकुलर टेस्ट कॉफी का कहीं कुछ एक मेमोरी में ले जाता होगा, एक पर्टिकुलर टेस्ट, पर्टिकुलर फूड, जैसे कोई स्वीट है, जलेबी है, जैसे वो आपके बचपन में कोई मेमोरी को ट्रिगर करती है. सो वेन एवर you start having those foods in the present time, somehow you go back in your memory lane and that particular mood is also triggered. This is one of the ways. The other thing is that this food which we are consuming is determining how we feel on the basis of, like, I'll give a few example. It's like if you are feeling very what do you say, very low, very lethargic, and एकदम से अगर आप कुछ स्पाइसी खाते हैं, सॉल्टी खाते हैं, यू विल गेट इमीडिएट एनर्जी. सो इमेजिन कि आपका फूड जो है वो आपके ऊपर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. एंड बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियसली ईटिंग, सो वी डोंट नो हाउ वी आर एक्चुअली unknowingly programming ourselves into behaving certain ways. And I'll ask Asta to talk a little about food and mood from her side. Okay, thank you, Priya. And yes, I completely agree that जो भी हम खाते हैं वो हमारे mood को definitely affect करता है. A lot of research and a lot of studies also have been proved that food affects our mood, and it gives us energy, and those vibes can be negative, can be positive. So like an expensive car जिसको premium fuel की जरूरत है, our brain is just like, imagine करो कि वो एक expensive car है, उसको fuel जो हमें देना है, that has to be very refined and fine, that can nourish our brain, and it protects us from getting stressed and mental जो health के issues हो जाते हैं कहीं ना कहीं. A clean diet plays a very important role. तो फॉर एग्जाम्पल, लाइक लेट मी टॉक अबाउट वाटर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में आप कम पानी पीते हैं एंड यू हैव वाटर डिहाइड्रेशन. So water hydration can be clearly seen in your handwriting, and water dehydration can affect your brain, because अगर हम पानी कम पी रहे हैं and we face डिहाइड्रेशन के इश्यूज हमको होते हैं, सो हमको ब्रेन में कंसंट्रेशन के इश्यूज हो जाते हैं. सो इफ यू लैक कंसंट्रेशन, check your water intake, and it also हमारे जो ब्रेन के थॉट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है. व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होता है, सो वी कांट थिंक क्लियरली. बेसिकली डिहाइड्रेशन कैन आल्सो फंक्शन, जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है और जो उसकी फंक्शनिंग है उसको स्लो डाउन कर देता है, एंड इट कैन डेफिनेटली इंक्रीज स्ट्रेस इन योर बॉडी. So hydrate रहना adequately, it is very important throughout the day. It can actually help you deal with stress and other mental health issues. It is important to think water as a very important nutrient your brain needs. So dehydration can also lead to panic attacks. So I'm talking about water, and Priyanka is just reminded that she has yeah, I think that's what I thought. It's better to drink water. Yeah. And I'd like to add something here, Asta. Like you're talking about water right now. I also feel that, see, 70% of our body is made up of water, right? Water. So, True. Yeah. even if dehydration is there and the water, there's lack of water in your system, somehow your brain is not getting that enough blood flow, and maybe that is one of the reasons that your concentration is not that well. Yes. At the same time, you have clouded thoughts. Definitely. And it can actually truly lead you to panic attacks and anxiety issues as well. So if you already know कि आपकी life में थोड़ा सा it is completely normal to have these emotional issues. Not everybody is same. किसी को पैनिक का है, एंजाइटी. आई थिंक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड पार्ट एंड पार्सल. इतना ज्यादा आजकल chaotic सिचुएशन में तो वैसे भी जिसको नहीं भी हो रहा है उसको दे आर
facing all these issues, I think we should accept it. It is completely normal. There is nothing wrong in that. It's just that we can always manage it. So जो water की deficiency, dehydration, अगर आप कम पानी पी रहे हैं and you're feeling that आप lost है, concentration issues हैं, you can't think clearly, and at the same time, if you have these traits in your handwriting, which I'm going to show, so definitely you need to increase the intake of your water, and with time, you can see in a week's time also, you can see that how it can actually help you in your basically brain की functioning के लिए बहुत help कर सकता है. So let me show. I have. But I want to add here that water will make your skin also better. Yeah, that's true. Okay, so if you can see here, this one, this E ka last stroke and this E ka last stroke is different. So when it is a flick kind of a thing, a pointed kind of a thing, I know it is like for a layman it is difficult to see, but if you can just focus and see our video again and again and then try to compare it, you will see the difference here. So if you have this kind of flicks in your handwriting, this shows that you have water dehydration, and this is a sample also of somebody's writing, and I have taken it the live. If you can see here also E in the end, see this in the end, you can see that it is little different than the normal E's normally one would make. So this is one of the important traits in your handwriting, which shows that you have water deficiency, and you need to increase the intake of your water. So if Priya, you would like to add something, or I should talk about? I think that today let's talk about two food items or food things which are related to excess. अगर body में हो तो क्या होता है? And then take two which are in lack तो क्या होता है? So अभी हमने water लिया है एक lack. So this is lack. Yeah. Okay, so let's one more. Let's take protein maybe. Yeah, protein. Let's take protein now. So now what happens when there is lack of protein in your diet? That is why everybody says that balanced diet क्यों इतनी ज़्यादा important होती है. I'm not a nutritionist, but now I can really चीजें एक दूसरे से इतनी कनेक्ट होती हैं. Not audible. अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है प्रिया? आ रही है और जा रही है. I think some Bluetooth issue. So guys, Asta will be just back, and we'll be talking about protein. Yeah. ठीक है. Where's your camera? I can't see you. I don't know what is visible. It's like some flower or some. Okay, so protein, we'll be talking about protein with Asta also, but protein is something which gives you grounding. So आप देखोगे कि protein mostly ground grains में भी मिलता है. It gives you stability, it gives you grounding. So अगर आपकी grounding होती है तो आप क्या feel करते हैं? Hi Priya. Am I audible now? Yeah. हाँ, ठीक है. Okay, so protein has amino acids, and which basically makes your brain, जो amino acids है, help our brain to regulate करने के लिए हमारे thoughts and feelings को. So when there is lack of protein in our diet, we might feel. I think some very bad. आ रही है आवाज? हाँ. I think very bad internet today. Yes, and such an interesting topic, but that's okay. I think the planetary position, the eclipse, the energies are such that even if after connecting twice, and now when we are laughing, it is connected. It's completely fine. Yeah. ठीक है. So when there is lack of protein in our diet, we can feel lost, and it can make us feel fatigued, irritated, and also disengaged. कि भाई कोई conversation करते करते जो होता है ना, कई लोग lost हो जाते हैं. It can also make us feel unmotivated, and कोई भी physical activity करने का हमारा दिल नहीं करता है. एक तरीके का it can also contribute to a condition of feeling of depression.
सो जो ऑलरेडी लोग इन चीजों से इश्यूज से डील कर रहे हैं लाइफ में, एंड इफ दे हैव लैक ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट, दे नीड टू चेक इफ दे आर फीलिंग लाइक दिस, ये फीलिंग ऐसी है, लैक ऑफ प्रोटीन चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम राइटिंग के ट्रेड्स जो मैं अभी अभी दिखाऊंगी आपको, इट इज देयर इन योर हैंड राइटिंग। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू सी बिकॉज अ ट्रेन्ड ग्राफोलॉजिस्ट ओनली कैन सी ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना भी वेरी 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 इजी थिंग्स आई एम गोना शेयर, जिससे you can easily check in your handwriting. So basically, protein can, if we eat right amount of protein in our diet, it can make us feel full longer. I'm talking here about feelings. So वो feelings में जो एक full की जो एक feeling आती है, वो that comes with the help of right kind of protein in our diet. Protein is an essential nutrient, and it is very optimal for the functioning of our brain. It is very very important, and protein in our diet can also help us elevate depression, anxiety, stress related issues, and it is a powerful tool. Science agrees to this. It is all proved, and it is all scientifically proven that a powerful tool for people dealing with stress, depression and anxiety, food plays an important role. तो जब मैं writing की अगर यहाँ पे बात करूँ, so I can show here. If you see this, I have written, the handwriting is the slant, the direction of the writing is haywire. Something is going to left, something is center, then thoda right जा रहा है. Joyous, if you see, happy, it is all going haywire. So this shows that the mental state is confused. So this we called a wavy slant. So when this is there in your handwriting, it shows that you are irritable, you're moody, you're disengaged, you're lost, you're confused. And this is another sample. If I can, the very naked eye, it's not easily seen, but still, if you can see here, you can see that the alphabets are dancing basically. So if you are feeling lost, and if you're feeling disengaged, irritable, then check your protein intake, check your handwriting, and if you are feeling, जैसे मैंने पहले water के बारे में बात करी है, if you check your water intake, अगर बहुत ज़्यादा concentration issues हैं, so these two things are definitely lacking in your diet. So you can try this, check your moods, and then check your handwriting, and then try to switch and change your diet, and probably you will see a lot of difference. And Priya, if you can add anything to it related to energies, would be great. So it's Yeah. your, yeah. Thank you, Ansa. I feel that protein is very much related to your grounding, and जब आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो कहीं ना कहीं आप यू लूज साइट विद योर आपका इंटरनल कनेक्शन टू दैट ग्राउंडिंग टू द मटेरियल वर्ल्ड स्टार्ट्स शेकिंग अप, and which somehow that is very interesting, like you're talking about the handwriting, the words are going haywire. That means you're not grounded, you're not secure. It's like कि अगर आप एक बलून को के अंदर हवा एक डाल के अगर आप उसको छोड़ दोगे तो if you're not holding it, it will start, अगर उसमें it start going in whatever direction the wind is flowing, right? So similarly, if you're not grounded, if you don't have an anchor, if you don't have something which is strong to hold you together, what will happen is that you will be confused, your thoughts will be haywire. As Asta said, that you might be irritable, you might have unstable energies, you might be lost. At the same time, जब आप protein intake लेते हैं तो somehow you are grounding yourself, and this is very interesting that beans and all these are like very grounding pulses and all, तो automatically आपको एक बहुत ही ज्यादा sense of protein rich आप जो भी food देखेंगे ना कहीं उसके अंदर एक grounding feeling आपको वैसे ही feel होगी. So it is very very essential if you that depression thing which Asta spoke about, because आप सोचो कि अगर आप grounded नहीं है, so you will be easily affected by anything which is more stronger and more stronger in negative side, तो आप उससे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाओगे, and you will not be able to come out of it because you are going haywire, lost. So you'll not be able to navigate through the issues you are in. So apart from
I want to give a tip apart from protein intake when you have these issues of lost, because these days everybody is going through. Just try to ground yourself by walking barefoot and doing some meditation or hugging a tree or going out in nature. That is one of the things which I wanted to share because of the current circumstances. You know, True. are feeling very lost and irritable because they don't know where the life is going. There's no grounding because imagine just Hmm. हम हैं आज के दिन which is Mother Earth. मदर अर्थ इज आर ग्राउंडिंग आर ग्राउंड. उसके ऊपर आप सोचो उसकी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ. दैट मीन्स Question. समवेयर मैनिफेस्टिंग अर्थक्वेक्स आ रहे हैं. और उसके अलावा जो कोविड की सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी ग्राउंडिंग है वो शेक हो रखी है. यू नॉट इवन फीलिंग सेफ ऑन अर्थ. सो इतना ये जो एनर्जी है इसके वजह से आई वुड लाइक टू जस्ट से दैट please try to have more proteins. Just check your protein intake, like Asta mentioned. Check your handwriting. If your handwriting is going haywire, try to control it. Try to Yeah. practice. At the same time, increase your protein intake. And at the same time, apart from these things, try to connect to nature. Walk barefoot on ground. If you're not able to go out because of the lockdown and all, you can just walk barefoot on your terrace, in your balcony, or maybe in the house. So Hmm. that's all I have for protein. And I think now let's take two topics which we talk about excess. So let's take caffeine Yeah. and the Yeah. other one, maybe Asta. Fatty foods. We can Okay, yeah. take fatty Yeah. foods. Yeah. Okay. Okay. Hmm. So you will So start? coffee, Yeah. yeah. So again, coffee is something which is very addictive, and coffee के अपने फायदे होते हैं. But here we are talking about excess of everything is bad. Where one is taking this particular food in excess, तो कहीं ना कहीं ये गौर करने वाली बात है कि कोई ना कोई इमोशनल इशू इज लाइंग देयर. दैट इज वाई वो फूड की क्रेविंग इतनी ज्यादा एक्सेस में हो रही है दैट यू कांट कंट्रोल एंड यू आर हैविंग इट अगेन अगेन. लाइक मे बी some people have, I know, 15 to 20 cups a day, which is like not normal. Obviously ये food कहीं ना कहीं replace कर रहा है कोई emotional feeling को, fill कर रहा है temporary basis पे. So we need to get into the skin of the issue. And coffee हो गया, tea, chocolate हो गया, and cola and all these energy drinks, basically they all give you a quick It's like a burst of kickstart. energy. Definitely. Yeah, Yeah. क्विक बर्स्ट तो बहुत मिलता है एकदम से. इफ यू सी दैट यू फील एकदम लो भी हो तो यू फील पेप्ड अप. बट वी नीड टू नो कि हमेशा हम इतनी जल्दी जल्दी बार बार लो क्यों हो रहे हैं. दैट इज व्हाई देयर इज सम इमोशनल इशू गोइंग ऑन. सो वी जस्ट फिक्स इट विद दिस किक ऑफ कॉफी और मे बी एनर्जी ड्रिंक. एंड उस टाइम पे जो बर्स्ट मिलता है बट इन द एंड अगेन वी फील एंशियस एंड डिप्रेस्ड. देन अगेन वी नीड दिस. सो दिस इज अ विशियस सर्कल. ये इसके अंदर से निकलना इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज इट कैन मेक यू ओवर कैफीन कैन मेक यू फील एंशियस, कैन डिस्टर्ब योर स्लीप. एंड उसके बाद इसकी एडिक्शन इतनी हो जाती है, इसके विड्रॉल सिम्टम्स से निकलना बहुत टफ हो जाता है. एंड इट डिहाइड्रेट्स अस. जो सारे कैफीन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें डिहाइड्रेशन भी देती है. इन केस यू आर नॉट टेकिंग इनफ वाटर एंड यू आर रिप्लेसिंग इट विद दीज कैफीन और ये सारी ड्रिंक्स, तो अगेन डिहाइड्रेशन का इश्यूज, तो जो फीलिंग लॉस्ट हो गया, साथ में तुम्हें एंग्जाइटी के इश्यूज हो गए. एंड इट कैन ओवर स्टिमुलेट योर जो ब्रेन का कंफ्यूजन है उसको. साथ में it can be very very harmful. So you need to check if you're feeling very very anxious and all the time you need this kick which you need it through coffee or caffeine. You need to check your handwriting and then you need to check on your feelings and then try to cut it down. Because एकदम से caffeine छोड़ना, I know it is very difficult. I've been there, done that. I was also not addicted to caffeine. I just took 2 to 3 cups a day, but still I used to feel that वो एक अजीब सी feeling आती है, kick मिलता है, then you feel low. So I don't like that feeling. So if getting off caffeine is not easy, so you need to do it. And जो over drinkers इसको over कर रहे हैं addiction में, so it is again very difficult for them. So gradually you need to cut it down, replace it with healthy drinks. And if we talk about handwriting here, so let me show it to you. Handwriting में you can see that जो ये baseline दी जाती है हमको लिखने के लिए, the single line, if we talk about here, we will write above the baseline and then like it will be wavy. Some people just write steadily on the baseline, but it's above, it's okay. But when it is wavy like this, it shows that the person is very depressed, moody, and can't think कब क्या करना है. Mood swings बहुत ज्यादा हो जाते हैं. And again, if you see this low T bar again,
So this is again another issue where depression के साथ साथ self esteem issues भी हैं. So in this handwriting I have a sample as well, जिसके अंदर I have marked a few things. If you can see here, this is Hindi English mix, but this is in the air, this is in the air, this is like in the air and going upwards. So if you can see here, room, it is going upwards. So ये सारी issues writing में, if you can see that you can't even, like, our brain is trained to write on a line sheet, right? वो तो ब्रेन की ट्रेनिंग हो रखी है कि एक लाइन शीट पे लिखना है बचपन से. वी आर टॉट 4 लाइंस, वो इतना ज्यादा. एंड इफ इमेजिन दैट यू कांट राइट स्टेबली, एक लाइन शीट पे आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो मेंटल स्टेट क्या होगा. एंड ऊपर से if you are addicted to things like coffee and or addictions हैं, so it's a vicious circle, it will make it worse. It is very important कि वो issue, जो emotional issue है, उसको हम लोग find out करें, which can easily be done through lab. That is why lab is here, where we are talking about mind, body and soul, because we do personalized therapies. We fix the issues in the bud. We find out कि क्या issue की वजह से overeating हो रही है, या aggressiveness हो रहा है, depression हो रहा है, anxiety हो रही है. वो issue को जैसे वो emotional issue है, जरूरी नहीं है एक इंसान में, एक इंसान में एक insecurity की वजह से ये सारा बवाल मच सकता है, तो किसी में low self esteem issue से होता है issue एक दो है. बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो साथ साथ हमारे साथ चल रही हैं, ये लॉकडाउन हो रहा है, ईटिंग हैबिट्स, घर में बैठे हैं हम लोग, रिपीटेडली गलत ही खा रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज टाइम पास है. ईटिंग फूड इज, आई थिंक, कंफर्ट ईटिंग कह लो, इमोशनल ईटिंग कह लो. सो इट्स अ विशियस सर्कल. सो वी नीड टू फिक्स दैट द इशू फर्स्ट, एंड ग्रेजुअली वो सारी चीजें जो अलाइनमेंट है माइंड बॉडी सोल का, वो अपने आप आ जाता है. एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फैटी फूड्स हियर. So before that, I want to say something here. Yeah, I want to add something to what you spoke about caffeine, and you know, the tea and coffee part. I would like to say here that somewhere I feel that it gives you a kickstart, and as you mentioned in the handwriting, I was smiling because you know you saw that it was like a floating thing, like you are in the air, you are, you know, true, above what you are experiencing in real. So there is a kind of lack which you are experiencing on your emotional front, और उस lack को complete करने के लिए you get into this addiction. But I want to say that me myself, I used to have 15 cups of tea or coffee when I was in school, and it is somehow the only thing which was because I did not have a lot of friends, so I think that emotional connect, true. and I was more into my imaginative world. I feel that kickstart to believe and to feel energetic all the time. You know, I was unknowingly, you know, binge drinking coffee or tea. But slowly, as my situations and my life also changed, I think my coffee and tea intake has also, you know, reduced a lot. Though I can stay away from coffee and tea when I wish to, but it's like I love having it because I like that kick, right? That kick. Yeah. So, you know, it's like somehow, अब देखो morning में भी आप पूरी रात आप उठे हो सो के एकदम से पूरा रेस्ट करके उठे हो, you have a cup of tea or you have a cup of coffee, you start feeling energetic and you get a kick. Okay, now I have to step out the bed, now I have to go and do my things. So it's like a push. And so that's normal. Yeah, so as you're showing in your handwriting, so sometimes we, like, it's okay to have these, you know, normal flows हमारी लाइफ में जरूरी है, but अगर बहुत ज्यादा excess, we're talking about excess. So जब excess हो जाता है, like 5, 6, 7, 8 cups of coffee, so आप सोचो कि आप अपने आप को लगातार external kick दिए जा रहे हो. At the same time, what is happening is that your body is getting anxious because you know आपके जो water है उसके अंदर आप caffeine उसके अंदर डालते जा रहे हो, तो उसकी वजह से जो आपकी anxiety levels है वो बढ़ जाते हैं, nervousness आ जाती है. उसकी वजह से जो especially depression patients है उन लोगों को बहुत ज्यादा anxious feel हो सकता है. So I think one should be very careful of having too much of these things. And excess of everything is bad. Yeah. So Asta, let's talk about fatty foods.
And Yeah. uh, before you say I'll share something from my side. Fatty food is something which you crave when you are having issues with power, when you're trying to prove yourself, or you're trying to get some energy. मतलब आपको लगता है ना कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ करने की, आपके पास पावर नहीं है, आपको जब लगता है कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, या लोग आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, समवेयर आई फील दैट यू स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ फैटी फूड्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग वो अपनी वो लैक ऑफ पावर को आप फूड से फिल करना शुरू कर देते हो, स्पेशली फैटी फूड्स. सो Asta, you can talk about fatty foods now, and I'll Yeah. talk about the tips later. Yeah. आई कम्प्लीटली अग्री विद यू प्रिया कि वो जो पावर की फीलिंग आई कैन रिलेट टू, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं. सो बेसिकली जो फैटी फूड्स हैं, ओवर एक्सेस ऑफ फैटी फूड, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम. सो अगर एक इंसान एक्सेस में लाइक एक आइसक्रीम, दो आइसक्रीम तक इज अंडरस्टैंडेबल, बट इफ यू आर टेकिंग एक्सेस में कि भाई तुमको वो क्रेविंग्स हो रही हैं एंड यू आर हैविंग इट, सो इट प्रूव्स दैट यू आर समवेयर इमोशनली fearful, you're insecure, again depressed, and you're feeling lonely. Frequent changes in your, and you will also see that there are frequent changes in your handwriting. So जब fat की craving होती है, normally it occurs in the people who feel that their life has no meaning and who feels empty and who feels insecure. So the body tries to fill in these feelings with fats. और फैट्स जैसे हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहता है. सो लाइक ओवर ईटिंग इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, दिस इज अगेन कि वो जो एक इमोशनल इशू है उस पर काम नहीं हो रहा है, एंड वी आर जस्ट फीलिंग इट विद ऊपर की चीजों से उसको हम लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज नॉट दैट वी आर निपिंग द इशू इन द बड, वी आर नॉट डूइंग दैट. एंड so I know somebody who has the insecurity के issues हैं, a client of mine, and she is over addicted to ice creams. So जब मुझको ये पता लगा, so through in her handwriting also I could see a lot of things. So वो ये है कि I try to in lab also we try to retrain the brain first, we try to work on the soul, and eventually body पे वो changes आते हैं. So if we talk about writing here, I can show you an example. If you can see here, it is something is off, which is again there is too much space between the words I am happy. So if you can see, there is too much space, and these जो first के जो start strokes हैं, they are too long. So when these start strokes are too long, it means that you feel insecure, fearful है, and जो gap between the words है, this is again shows that you are feeling lonely. And if I can show you in the example I have here, this is again a 13-year-old child, and if you can see that she had no friends, too much gap between the words, and she was addicted to ice creams, and parents ने पूरा try कर लिया, but obviously at this tender age parents are they get helpless, and जो बच्चा मांगता है कि चल आइसक्रीम मांग रहा है, मतलब they see that the child is off, not talking to people, not having friends. Again, I think Priya, I can relate to that your story as well. Maybe at that time when you had no friends, you need a kick from coffee. Now you have friends ka kick, so you don't need that much of coffee. Yeah, so it is there. It is actually there that food plays an important role in our lives, where वो बहुत ज़्यादा हमारे moods को affect कर सकता है. So imagine if you're already in a disturbed state, उसके ऊपर से आप ये anxiety वाले food intake आप we are doing it, so it is only make it worse. और कुछ नहीं होगा. And especially in this situation, in this lockdown situation, we all need to hold on. It is not that कि you and me are not feeling having these feelings, obnoxious feelings. Everybody is having these feelings. It's just that we need to fight. It is very important to hold on, and this shall pass. ये एक hope, एक faith is very important, and this is amazing time also. We won't get in our lives इतना time जिंदगी में कभी भी अपने ऊपर काम करने के लिए. That is why I think this a lot of people in lab have enrolled, which shows that people are trying to get better, be their better version, transform their lives. It doesn't mean that you have issues
इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट यू लव योरसेल्फ, दैट इज व्हाई आप योगा कर रहे हो, सब यू डांसिंग, आप कोई भी एक्टिविटी लाइफ में अगर हम कर रहे हैं, अगर हम अपनी डाइटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी लव आवरसेल्फ, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. So in the end, tips में अगर I would like to give some tips, then Priya can give. Now writing tips again, I have told that ये बहुत ज़्यादा personalized therapies होती हैं. I can't just normally generally give a lot of tips. And वैसे भी it is a long process. I need to keep a check. We need to keep a check on our clients on daily basis. But general tips, if I can give, which are tried and tested, like first of all, we need to see and ask ourselves that we are truly hungry or we are just craving. So जब वो truly hungry है, so if you are अच्छे से meal खा लिया है, your stomach is full, you should not have these unnecessary cravings. अगर वो cravings हो रही हैं, we need to replace it. We can have a lot of water. उसको replace करने के लिए, उन cravings को curb करने के लिए, normally आजकल तो nutritionist, they have some amazing ways, chia seeds and a lot of things they have in options which can make you feel full and not make you feel कि ये feeling आए, cravings आए unnecessarily. And dehydration also, at times if you having dehydration in your body, it can also make you one feel like we are hungry, होते hungry नहीं है, but it is dehydration. So again, water can help. Now brushing your teeth, I think 2 to 3 times brushing your teeth again and again, it works like जो mint का taste है, जो हमारे food taste को bitter कर देता है. So आप जब भी brush करोगे, उसके थोड़ी देर बाद, like it works for me. So whenever I don't want to wish like crave खा लिया अच्छे से and I don't want to overeat, I'll brush my teeth and उसके बाद वो subconsciously it's there in my mind कि यार brush कर लिया है, अब मैं और नहीं खाऊंगी, और वो taste एक tongue पे ऐसा bitter रहता है कि वो food की it works like chewing gum also. Chewing gum में again I think go for sugar free chewing gums, because chewing gums normally they have a lot of sugar in that, so it also helps us to keep our mouth busy, क्योंकि normally यही होता है कि एक habit हो जाती है. It is not that we are hungry. It is a habit where we just eat and eat wrong foods and make our mental state जो है, जो mental health है, body है, सब खराब हो जाती है. इट इज लाइक अ विशियस सर्कल. अगर फिर भी टेम्पटेशन हो रही है एंड यू नो यू आर फुल, यू आर अवेयर, यू नो स्टिल हंग्री, कॉल अ फ्रेंड, go for a walk on your terrace. Abhi to in a lockdown situation, I can't suggest that go for a walk in a park as well. You can read a magazine, read a book, listen to music, kuch bhi productive, do mandala art, do our therapies, join us, do anything, but please don't fall in this vicious circle where it is very difficult to break and come out of it. That is all what I need to say. And Priya, if you have some suggestions, please give. Yeah, thank you, Asta. Wonderful suggestions. So, yeah, I have two on my list as well. So I think you have already said, so I'll not share those. But I want to say only one thing, that जो food है, अगर आप देखोगे कि it somewhere talks about our attachment to the world, because food is what gives energy to our body. लेकिन आप देखोगे कि जो पहले के सेंट्स थे, या जो सन्यासी लोग होते हैं या सेंट्स होते हैं, generally they are on fruits and milk, या कुछ पर्टिकुलर लाइट फूड खाते हैं, या उनकी डाइट में इतना कुछ नहीं होता है. सो समवेयर दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द मोर नेचुरल वे ऑफ फूड इनटेक, सो विच हेल्प्स देम कीप देयर माइंड क्लियरर, so that they can connect to more higher energies or whatever they are intending to manifest, the siddhis and जो भी वो करना चाहते हैं. बट वी जो हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में हैं, हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को, बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट इमोशंस एंड वी आर एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स, स्टेट्स. इट्स लाइक माया. अगर आप दूसरे टर्म्स में यूज करोगे, बात करोगे, तो इट्स लाइक माया. तो जब आपको इस माया में जब एक्सपोजर होता है, तो यू स्टार्ट गेटिंग टेम्प्टेड. तो उस टेम्पटेशन के अंदर क्या होता है, वी आर एक्सपोज टू 10 डिफरेंट थाउजेंड ऑफ थिंग्स. बट जिन चीजों के साथ हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की क्रेविंग होती है. ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि हर किसी को एक ही चीज की क्रेविंग होती है, राइट. किसी को पोटेटो की होगी, किसी को शायद आइसक्रीम की हो रही है, किसी को शायद कॉफी की होती है, किसी को शायद फ्रूट्स की हो, किसी भी चीज की आपको क्रेविंग हो सकती है. बट हर किसी की क्रेविंग अलग है, बिकॉज हर इंसान अपना जो फूड है, या जिसके साथ जो उनका कनेक्शन है फूड के साथ में, उनका पर्सनल है. उसी तरीके से जो आपके पर्सनल इश्यूज हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो सारी की सारी आपके फूड इनटेक पे, आपके जो मूड्स हैं, वो
रिवील करती है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा सॉल्टी चीजों में कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर जनरली लो। सो जिनका बीपी लो होता है कहते हैं इमीडिएटली आप कॉफी पियो या सॉल्ट लो, you know, because generally when you are low you want to feel high, the opposite. When you are feeling insecure you want to feel secure, so you go and have ice cream or get a fatty food. So हर चीज में आपके एक रिफ्लेक्शन है. I want to say that apart from working on yourself from outside, like जैसे हमने अभी बात की, आसरा gave a very beautiful example of mint and all, बाहर से तो हम वर्क कर ही रहे हैं. I personally feel कि हमें बाहर के साथ साथ अंदर से भी वर्क करना पड़ेगा. This is again like a lab theory, बिकॉज आई फील दैट हम लोगों को ये लगता है कि जब तक आप दोनों तरफ से अपने ऊपर काम नहीं करोगे, फ्रॉम द इंटरनल बीइंग ऑफ यू एंड एट द सेम टाइम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल साइड, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे. जब आप अपने कोर इश्यूज पे जाओगे, सबसे पहला टिप मेरा ये है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग हो रही है, जस्ट फिगर आउट व्हाई आर यू हैविंग दोज क्रेविंग्स. सॉल्टी फूड की है तो उसका ऑपोजिट आपके, मतलब आप सोचो कि आपके पास क्या है तो आप उसके ऑपोजिट की तरफ आ रहे हो. अगर आपको कुछ हाई चाहिए तो दैट मीन्स यू फीलिंग लो. इफ यू आर इनसिक्योर दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी. सो जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपके जो ये बिहेवियर पैटर्न है टुवर्ड्स फूड, और आपको कौन सा मूड चाहिए होता है, जनरली आपको किक स्टार्ट चाहिए होता है या आपको फैटी फूड चाहिए है टू फील सिक्योर, आपको जो भी फूड की क्रेविंग हो रही है उसके पीछे जो इमोशन है, जो रीजन है, सबसे पहले आप उसको फिगर आउट करो. बिकॉज जब आप फिगर आउट कर लोगे तभी आप, एक तो रियलाइजेशन से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, बिकॉज यू आर कॉन्शियस देन यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. बट जब आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है. दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, ऑफकोर्स एक्सरसाइज. एक्सेस ऑफ एनर्जी, जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स है, जो सिक्योर हार्मोन्स है, जो हमारे सारे अच्छे हार्मोन्स है, ये सारे सिक्रीट होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं. आज योगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल योगा डे भी है. सो बीइंग अ सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर, आई वुड रिकमेंड कि आप योगा भी करिए. योगा विल हेल्प यू बिकॉज आपके जब ये हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे, कहीं ना कहीं आपको जो एक्सटर्नल फूड है उसकी जरूरत उतनी नहीं होगी जितना आप ऑलरेडी वो एनर्जी अपने आप अपनी बॉडी में क्रिएट कर पाओगे. ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी. और जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ. People who are eating a lot of fatty foods, they don't believe in themselves. They don't see themselves as powerful beings. They see themselves as somebody who is just bechara, somebody who does not have any power, somebody who does not have friends, somebody who does not have who's not complete. तो जब आप अपने आप को कनेक्ट करोगे, अपने आप से जानोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर ये चीजें आपकी होंगी. द अदर थिंग इज एक्सरसाइज के बाद में है मेडिटेशन, ऑफ कोर्स. सो अगेन इट विल बैलेंस योर माइंड एक्टिविटीज. एंड जैसे आस्था ने बोला उस तरीके से आप मिंट ले सकते हो, सौंफ ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीजें ले सकते हो, छोटी चीजें जो यू जस्ट पुट इन योर माउथ एंड यू जस्ट चेंज द टेस्ट इन योर माउथ एंड ऑटोमेटिकली यू विल चेंज योर क्रेविंग. So that's all I think from us. Do we have any questions? Yeah, so you want to say something? Yeah. I would like to add to it कि I also made a video like I'll be posting soon. What I've realized is that कि हम लोग एक motivation की wait करते हैं कि एक feel आएगी, motivation आएगी तो हम करेंगे, हम motivation आएगी तब हम diet करेंगे या अपना ध्यान रखेंगे या whatever. We just keep waiting for that right moment कि वो kick आएगी, वो motivation आएगा, किसी की बात अच्छी लगेगी. मुझे ऐसा लगता है action is so important. Action first, then gradually the motivation comes. क्योंकि अगर हम action ही नहीं करेंगे तो वो vicious circle में हम लोग बस बैठे हैं. Like couch potatoes, we are there and we are not doing anything, just waiting for the feeling to come. Feeling won't come. जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, आप अपना हैबिट्स को अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज के लिए ले लो, 3 दिन जबरदस्ती उठ के करनी पड़े, चौथे दिन मोटिवेशन आ जाती है ना कि यार नहीं ये हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बॉडी अच्छी लग रही है, स्किन अच्छी लग रही है. So it is that action first, then motivation comes. People keep waiting to get motivated कि नहीं कुछ ऐसा होगा, बोलेंगे, इंस्पायर होंगे, इसकी सुनेंगे. नहीं, it is very important कि आप लोग एक्शन लीजिए. Just do things first, try things first. इसी वीक में just try. जो भी ओवर क्रेविंग्स हो रही है, एक्सेस ओवर क्रेविंग हो रही है, उसको रोको. Try just a habit.
उसको खाने की आप नहीं, आप वो 3 दिन 4 दिन ब्रेक डिटॉक्स करके देखो, you will feel immense changes in your mental state as well. So it is very important. Yes, we can ask, see if there are any questions, Priya. Yes, there is a question. Soumya is asking that if we have excess of water in our body, do you think it is, how can we see that in the, I think, handwriting? How do we know that we are drinking less water or excess water? No, less water ka I suggested that it is there when you are drinking less water, the E would be like that, and you will flick your E's normally. एक normal end stroke, normal जो school form style नहीं होगा, it will be like a flick. But excess of water ka I don't think so. There is anything like if she suggested, Soumya suggested, I would research on it now and we'll get back to her. But otherwise, if something related to energy is, I think you have some to say. You suggested something related to water retention in body once. Like I think I remember. Say water has a very strong connect with your mind and also moon phase, because moon causes the tides on earth, right? So moon can control those इतने बड़े ocean की tides को, अगर वो control कर सकते हैं तो हमारे अंदर जो 70% water है वो भी control कर रहा होगा moon. So it somewhere it happened that I suggested to somebody that maybe you are too much of excess of moon energy. You tend to have a lot of water, and again it makes you like maybe more extremely what do you say emotional Sensitive? about Oh. emotional about things. Hmm. आप किसी एक थॉट में चले गए तो शायद आप उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल या बहुत ज्यादा टची हो जाते हो, तो देयर इज सम एनर्जी अबाउट इट. बट आई थिंक एक्सेस ऑफ वाटर यू ओनली नो व्हेन यू फील दैट आपको बहुत ज्यादा पानी आ रहा है. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ कोर्स आपको पता चल रही है, राइट? तो अगर वो डेफिशिएंसी नहीं है, दैट मींस यू आर डूइंग फाइन, right? Yeah. So True. I think that's fine, Soumya. If you bring some more water. Okay, so Sakshi is asking, excess of sugar intake is also bad. Yes, of course. Yes. I think sugar is otherwise also very bad, but I think Emotionally also, it's like again you're feeling fearful, depressed, lonely, insecure. That is why you're having intake of these sweet things to fill in those emotions and feelings. Again, you need to nip the issue in the bud. See why are you feeling like that? Work on that, and eventually these food cravings will deviate. ये अपने आप कम हो जाती हैं. someone posted that they have excess of meetha, they love excess of meetha. It is because somewhere you feel that आपकी लाइफ में मिठास नहीं है, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, आपकी लाइफ में वो लव नहीं है, वो केयर नहीं है, मे बी जितना भी है आपको कम लगता है, उसकी वजह से आप एक्सटर्नल चीज से आप अपने आप को कंप्लीट करने Fill की in कोशिश कर रहे हैं. True. Yeah. Hmm. So if you have any other questions, please guys, you can ask right now. I think there are no more questions. Okay, so Mahima is asking, what about tea? So we just spoke about tea, Mahima, in the beginning. I think you should watch the video from the beginning. We'll post it on IGTV. And yeah, thank you, Mahima. Mahima is my yoga teacher, yoga guru. She Oh, taught me yoga. okay. Thank you, Mahima. Okay, so Okay, so again, a little glimpse if I can give. So, too much tea, coffee, chocolate, and or energy drinks, they can make you feel anxious and depressed. So, अगर anxiety के issues हैं and you have disturbed sleep otherwise as well, and dehydration है body में, so again you need to stop it. You need to check कि ये feelings आ रही हैं. So, first of all, work and deal with these issues and try to control the intake gradually. Not suddenly, you can't stop. You will end up with withdrawal symptoms, which is again harmful. So that is it from my end to Mahima. so sweet. Astha. So girls and all the people, I think I see more of girls present. Girls, yeah. Thank you everybody for joining in, and it's lovely to talk to you all. So we'll keep coming with the we'll try to be present with the new topics and different kinds of topics, so that we can try to make you more aware about different areas of your life where you can work and improve your life. So Mahima is posting that she has less of sleep these days. Yeah. Again, it's a vicious circle, no? That is the thing, that there is issues and we end up being trapped in this vicious circle. So
So yeah, if any suggestions, any topics you want us to talk about, and soon we're planning to come live on relationships, because we feel that relationships are one of the most important topics, and we'll try to cover them in some time, Near Korea time. future, yeah. Yeah. So thank you all, and do follow us on Instagram and on Facebook, and yeah, thank you, Thank you, thank you everybody. for Thank you, joining in. Priyanka. Yeah, Thank you. thank Thank you. you. Oh, Bye bye. thank you, everybody. Take care. Yeah, bye, bye.